just going to give you a fair disclaimer. इसने स्टार्टिंग में बता दिया कि हिस्टोरिकली मुझे इतनी सारी चीज़ें मराठा एम्पायर के बारे में नहीं पता है, तो आई डोंट थिंक यू शुड बी एक्चुअली reviewing a Maratha movie, a Maratha historic movie, a Hindustani historic movie, a Bharatiya historic movie, number one. And number two, since you are actually bearing the responsibility of review a movie that is a biopic without knowing the history, so she is giving you, the audience, the responsibility of knowing the history and then watching her review and the movie. So again, if you are subscribing to her bias, then you would subscribe to what she's saying. If you're not, then you will see through the bullshit. So let her talk. We will counter her with actual logical and historical facts बाद में at the end of the video. ठीक है? I am going to note these things down. एक एक करके सारा breakdown करेंगे उसमें. ठीक है? चलो, let's start. इस फिल्म के बारे में कंप्लेंट करना आसान है, कितनी लाउड है, कितनी वायलेंट है, कितनी मचीज्मों से भरी हुई है, लेकिन Literally talking about Sambhaji, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and machismo is supposed to be a synonym to that name, that legacy. So yeah, that if the film is showing you machismo, if the film is showing you violence, then that is justified because of the biopic that is serving, and since it's not just fiction. Another thing, I'm going to address abhi se the few problems that Chhava actually has. First of all, the action in the movie is very lackluster. उतना अच्छा एक्शन नहीं है पूरी मूवी में. सेकेंड, कोई भी सीन एक पर्टिकुलर फ्रेम में नहीं टिकता है. स्टोरी बहुत स्कैटर्ड है, बेसिकली बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत स्कैटर्ड है. बट ओवरऑल छावा जब ख़त्म होता है, जब मूवी ख़त्म होता है, 2.5 घंटे की एक मूवी जब ख़त्म होता है, इन द लास्ट 40 minutes you will get a very good historical slap. And apart from that also, you will get out of the theater understanding what the history actually was and how, but the movie did not do even like 20% of the actual brutalities that were carried on at that time by the Mughals. But anyway, I guess she's a Mughal sympathizer or whatever her own political standpoint may be. The movie may not be perfect, is what I'm trying to say, but it still sets a standard because there are not mainstream conversations about Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So now with Chhava, at least we have that conversation. So this is the standard. From this point on, I wish that there are more movies talking about Chhatrapati Sambhaji Maharaj. So from like a standard, it's good enough, but it's not a perfect movie. However, you need to understand the historical significance. You need to understand that the movie is a biopic, and then look at it instead of looking at it as a fictional movie, which she's doing with her review. अभी for the next 8 minutes or so, unlike this film, I'm going to remain calm and try and explain छावा पर मेरे ओपिनियन क्या हैं, क्यों हैं और इनका मैं क्या करने वाली हूँ. सुनो, थोड़ा सा टाइम निकाल के. Hey all, my name is Sucharita. Welcome back to my channel, जहां आज लक्ष्मण उतेकर की छावा के बारे में हम कर रहे हैं बात. It stars Vicky Kaushal in the titular role. ओपनिंग क्रेडिट्स खुलते हैं अजय देवगन के वॉइस ओवर से. ऑडियो स्केप है वॉर का, तलवार हुनकार सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, और ये एक सीन के सूत्रधार आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि इंडियन संस्कृति इज द ग्रेटेस्ट, ऑलवेज हैज बीन. बिफोर द वर्ल्ड न्यू हाउ टू लिव, इंडिया हैड अ सिविलाइजेशन, ऐसे करके समथिंग इनएक्यूरेट मेंशंस. So Bharat, I don't understand why people who are Hindus and still left are still like with this narrative of Hindustan or Bharat not being a good country. They do not want to stay in the country, not just because of the government, but in general. They hate India apparently, with the mindset that this phase is coming out of. So I'm just noting these points down. Ki Bharat being a good civilization, Indus Valley civilization being a good civilization is a historical inaccuracy according to her. So I'm going to note these things down. एंड में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. थोड़ा बहुत मेरा दिमाग फिर सकता है क्योंकि आई एम सीइंग द स्टुपिडिटी ना, तो हाउ कैन आई जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट. आई पैराफ्रेज. पर इमीडिएटली, क्योंकि न्यूआंस या फैक्ट्स की तरफ झुकने का इस फिल्म का कोई विचार है ही नहीं, वी जंप फ्रॉम एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री स्ट्रेट टू द मेन मुद्दा. डिंग डिंग डिंग, मुगल साम्राज्य.
100 सालों तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया. There is a note of accusation here कि भारी गलती हुई पूर्वजों से. अब ये एक्सपोजिशन डंप से शुरू होती हुई फिल्म इस गलती को सुधारने आ गई है. Of course there are words in this monologue which are in Urdu, जुल्म, खिलाफ, सल्तनत, but the enemy we are told is clear. सिनेमा के लिए आए थे, सरमन सुनने बैठ जाओ. धीरे धीरे सब किरदारों से वायलेंट मुलाकातें होनी शुरू होती हैं. सब में सिर्फ एक मेन है, विक्की कौशल. किरदार है शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी भोसले का. फर्स्ट सीक्वेंस में घोड़ा दौड़ाते स्लैश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे. I'm going to just say this for the rest of the review because this is agitating me. छत्रपति उड़ाते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुगलों को शिकस्त देने पहुंचे हैं. सेटअप इज बेयर मिनिमम. द ऑडियंस इज ओनली टोल्ड कि ये जो पिट रहे हैं ये मुसलमान हैं, हिंदुओं से टैक्स लेते हैं, खराब लोग हैं. ये बताने के लिए हैवानियत टपकाई गई है उन सबकी शक्लों से. कावा पी रहे हैं. आई एडमिट माई नॉलेज ऑफ द लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड डीपली इंटरेस्टिंग मराठा हिस्ट्री इज लिमिटेड. or basic any history, I'm guessing, because she does not know about the tax that Mughals and specifically this guy had on any non-Muslim. Every non-Muslim was supposed to pay a tax. Jizya tax था मेरे हिसाब से उसका नाम. That every non-Muslim was supposed to pay because they are not Muslim, and if they didn't want to pay that tax, they were asked to convert to Islam. जंजीरा गए तो कुछ वहां पता चल गया. औरंगाबाद में बहुत इतिहास है, कुछ एकेडमिक ऐसे पढ़े हैं. पर बी वॉन्ट कि जो कहानियां स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं इस फिल्म में सत्य से प्रेरित होकर उनकी नींव रखी तो गई है, लेकिन 100% फैक्ट इन्हें मान नहीं लीजिएगा. एज अ वर्क ऑफ आर्ट की तरह देखें तो बेहतर रहेगा, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टीज काफी हैं. डायरेक्टर लक्ष्मण उतकर ने Says the person who does not know anything about history, as mentioned by her. Okay. कहा है कि 1 साल तक उन्होंने रिसर्च करी इस फिल्म को लिखने में, पर चुने हुए अंश इतिहास के जो दिखाए गए हैं वो याद रहे, चुने हुए हैं, संपूर्ण नहीं है. तो दूसरी तरफ है मुगलिया सल्तनत के लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर औरंगजेब, प्लेड बाय अक्षय खन्ना, हु इज जस्ट शोन डीकेइंग इन रियल टाइम क्वाइट कॉमिकली. फर्स्ट सीन में मुलाकात होती है. आई हैव टू एडमिट वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे टू इंट्रोड्यूस अ विलेन. Quite comically, okay. Aurangzeb at that point of when he was facing Chhatrapati Sambhaji Maharaj, he was old and he was actually decaying to the point that after Chhatrapati Sambhaji Maharaj was tortured and then ended, his life ended, Aurangzeb eventually died of that old age, of decaying basically as a human being. Aurangzeb is sitting in his court and he is knitting. The silliness is quickly overshadowed by the lack of communication between his wig and his beard. जैसे उम्मीद है, लेकिन आगे बिल्कुल वैसे औरंगजेब की फितरत है. कोई रंग नहीं, कोई शेड नहीं, आंखों में सूरमा, गालों में गड्ढे. मतलब इज इवल. और लोग आते जाते हैं, सबके नाम यहाँ गिनाएंगे तो रिव्यू As he was. खत्म ही नहीं होगा. बट आई हैव टू एडमिट, नील भूपलम को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं इस फिल्म में. मजेदार इंसान लगता है मुझे, बेस्ट एक्टर. इट्स अ शेम वी डोंट गेट टू सी मोर ऑफ हिम. आशुतोष राणा फॉर द सेकंड टाइम इन एज मेनी वीक्स अपीयर्स स्पीकिंग इन स्पष्ट चेस्ट हिंदी. विनीत कुमार सिंह हैं कवि कलश, द वॉरियर पोएट, जादुई एक्टर है विनीत. लेकिन अगर बेहतर फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें वो लेखक बने हैं, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव अगले हफ्ते आ रही है. मोर ऑन दैट लेटर. If we ask Vineet Singh, he would probably say that Chhatrapati Sambhaji Maharaj's biopic Chhava is the project that he is very proud of. But according to her, a better film is something else. छावा का रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट से कम होकर सिर्फ 2 घंटे होता अगर स्लो मोशन शॉट्स सारे नॉर्मल स्पीड में दिखाए जाते. हर बार जब भी संभाजी फ्रेम में आते हैं, मानेगा या नहीं, स्लो मोशन Chhatrapati Sambhaji. में आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के फुल सपोर्ट के साथ. द कैमरा bows down to Vicky Kaushal each time, and सच बताऊं, I don't mind that too much because Vicky Kaushal just cuts a formidable figure as very few others can. तरह तरह के mythological shades. He's Bhim, he's Parshuram, he's the Vanar, he's a crocodile, he's a cyclone, RRR का रामचरण और NTR Junior सब. It's a visual short hat. So basically, she's trying to mock the Hindu gods and the Hindu history, basically. The history of Bharat, the history of Indus Valley civilization, the history of Maratha Raj, the history of she's very in favor of the history of Mughals. She's very in favor of the history of the British. But anything other than that, anything to do with the Hindu aspect of the movie, of our history, she's mocking that very easily. I would propose a question about this. Would anyone who is Muslim, would they be very keen on disrespecting their own religion, disrespecting their own religious history? Would anyone who's a Christian would be very interested in disrespecting their own Christian history? I don't think so. But I don't know why we still are letting this Hindu hate come from Hindus only. And that has been a divide. I guess it's something to do with the government, but also, like, if you're so oppressed in the country and you feel hatred towards the country and the history of the country,
leave. एंड की डिवाइन रेट्रीब्यूशन वो देने के लिए आ गया है. हर क्लोजअप में अलग दिखता है, हर वाइड शॉट में दूर से विजिबल. विकी एंड सिनेमाटोग्राफर सौरभ गोस्वामी दोनों ने मिलकर संभाजी को बनाया है इस फिल्म में. छत्रपति. जो नहीं बना है वो है इस फिल्म की एबिलिटी टू अलाउ मी टू एंटर इट. कहाँ से अंदर घुसूं, एक क्षण के लिए आप रुकते ही नहीं है. इम्पॉसिबल है ऐसी फिल्म से एंगेज करना जिस आई एम गोइंग टू अग्री टू दिस पॉइंट कि मूवी रुकती नहीं है, इट्स अ टाइम लाइन स्किप. ठीक. में ब्लड शेड, खूनम खून है तो बहुत, पर एक रिफ्यूजल भी है टू एग्जामिन द नेचर ऑफ वॉर इटसेल्फ. एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन शुरुआत में आती है व्हेन संभाजी सीज अ मदर एंड अ चाइल्ड और अमिड फाइटिंग सोल्जर्स. यू नो दैट लेड मी टू बिलीव कि परहैप्स देयर विल बी सम इंट्रोस्पेक्शन कि मतलब बेचारे लोग. बट नोप, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लार्जर मोटिव ऑफ संभाजी मिसिंग हिज ओन स्वर्गासी मदर. नॉट एक्चुअली. छत्रपति शिवाजी महाराज का के रूल्स में से कुछ थे कि वॉर शुड नॉट हर्ट children, war should not hurt women, and war should not be against any religion. It should be towards Swarajya. And Chhatrapati Sambhaji Maharaj looking not a smidge more faith. at a child in the middle of the war and helping him to get to his mother is not about reflection about how war destroys. War destroys. He knew that war destroys, and his point of that war was to gain Swarajya, to have an independent India, to have an independent Bharat at that point. And war was a defense tactic at that point because the Marathas, the Rajputs, everyone who was actual patriotic towards this country, were fighting for their own freedom against the Mughals, against any other oppressor. Before that, they were Afghans. After that, they were Britishers. So the fight was always about independence of India, of Bharat. So it's not about Chhatrapati Sambhaji Maharaj looking at a child and feeling कि अरे नहीं वॉर से तो कितना कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है. नहीं, it's about him having to fight that war because he has to defend his own country, his own motherland. But that scene, that shot is to signify that the principles of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and later on in the next 15 minutes he also has a speech where he talks about how women, children, and any other elderly or any other religion, people from any other religion should not be killed just because of their religion. It's a war for Swarajya. It's not a war against any other religion, which apparently she does not understand, and she feels hurt in proxy of the Muslims of the country, I guess. I don't know. Sucharita Tyagi, a Hindu, she should be thankful to Chhatrapati Shivaji Maharaj. She should be thankful to Chhatrapati Sambhaji Maharaj. She should be thankful to the freedom fighters of this country. We consider Chhatrapati Shivaji Maharaj to be a god of independent India, and she should have been thankful. Instead, she's just talking bullshit. ethos on offer. तकरीबन 3 घंटे तक वायलेंस दिखा दिखा कर अगर उसकी फ्यूटिलिटी के बारे में मंथन चिंतन ना हो फिल्म में तो प्रो वॉर फिल्म बना रहे हैं आप. क्योंकि उरी जो चल गई थी एक बार. वॉर इज ग्लोरियस, वॉर इज नेसेसरी, वॉर इज अ राइट ऑफ पैसेज. Just like I said, war was necessary. War at that point was necessary. I don't think she understands what nuance or this is the problem with the left leaning intellectuals who think they know everything and they should have a say in everything. कभी कभी लगता है ठीक है भाई ब्रॉडकास्टिंग बिल ले आओ, काश ऐसी आवाज़ें चुप हो जाए. आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर द ओवरऑल health of the country, overall mindset of the country. I am not trying to make this video and spew hate towards her, but like it's a hateful retaliation. I can't help it. I can't help it. She's so hateful towards the Hindus. She's so hateful towards our history that it's blatant at this point. This faces that representation. Anyway, जजिया टैक्स के बारे में मैंने बात कर ली, भारत नॉट बीइंग परफेक्ट के बारे में भी मैंने बात कर ली. आई डोंट थिंक एंड के लिए मैं कुछ रखने वाला हूँ. इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन फ्लो. ओके, द पॉइंट दैट शी इज ट्राइंग टू मेक इज दिस मूवी इज मेड टू शोकेस वॉर एंड इट्स जस्ट फॉर प्रॉफिट एंड just because the formula of Uri worked, which is why this movie is made. That is of the biopic of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Very idiotic thing to say.
I don't know why she has this mindset, but this is exactly what the propaganda mindset जो मैं starting में video की बात कर रहा था. When you are so blinded with the blinds of propaganda, with the blinds of your own agenda, you do not see facts as facts. You do not see uh, movies as movies. I don't know how she's a reviewer. You see everything through the lens of your own propaganda. So she thinks that this movie is made to glorify war and to represent how important war was. War was important for the lives of the people who were slain for this country. War was important for Chhatrapati Sambhaji Maharaj, whose life ended with immense torture, humiliation, and eventual death. War was very important at that point for him. And we bow down to him for his sacrifice for the country. But I'm going to move on. हिस्ट्री को समझा नहीं जा रहा है, बस एक कर्सरी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ परफॉर्म किया जा रहा है. पानी में से उड़ते हुए वॉरियर्स आ रहे हैं तो हिस्टोरिकल एपिक को भी स्टाइलाइज्ड एक्शन फैंटेसी में बदल दिया, क्योंकि भाई मेरी पिच मेरा बल्ला, मैं कुछ भी करूं. शोर इतना समूचा है इस फिल्म में कि मानो सेट पर एक्टर्स भी खुद को और एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं. एक एक लाइन ऐसे डिलीवर करी गई है इस फिल्म में जैसे रामलीला के मैदान में स्टेज पर फंक्शन हो रहा हो. दिव्या दत्ता तो बेचारी राजमाता सोराबाई बन के आती हैं, पर सडनली उनका ध्यान हो जाता है. अच्छी खासी आंख बन रही थी, चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया बिना कंक्लूजन के. ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे. मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम. What I found the most frustrating was the complete inability to introspect. History से हमने सीखा क्या? एक सीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर दिखते हैं. संभाजी asked him if he's well taken care of. यहाँ foreshadowing of a larger storm that is about to come. कि मराठे और मुगल आपस में लड़ते रहे और इसी अराजकता का फायदा उठा अंग्रेज देश में घुसने लगे जिन पर पूरा ध्यान किसी का गया ही नहीं. स्वराज्य की हुनकार लेकर बैटल में दौड़ना कितना फायदेमंद रहा अगर आखिरकार पूर्ण स्वराज देश को नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही मिलना था. Again, I'm going to. Okay. Some people should have an IQ test consisting of history, basically, to be a public speaker. I don't think India got independence, and I don't think anybody thinks that India got independence through non-violence. There was Bose, which is why we are still independent. There was Sepoy Mutiny, which is why we are still independent. There was also a hand of Germany, Japan, of the troops in Germany, of the troops, the POWs, the Indian POWs who were fighting for Britain, who were captured in Germany, Japan, who were persuaded by Bose, Netaji Subhash Chandra Bose, to have that Sepoy mutiny. There was a voice of hope in the Indian crowd who revolted against the British at the end of the British Raj in India. And that hope was coming from the thought of Netaji Subhash Chandra Bose coming back to India with his army through Myanmar, through Burma. And that hope gave us freedom today. It was not Mahatma Gandhi sitting and protesting. Sitting and protesting has done nothing to this country, in case you did not understand it yet. It was always violence. So was Chhatrapati Sambhaji Maharaj's entire life, his sacrifice, his father's life, his father's sacrifice. War is necessary in a country which is tormented by oppressors, be it Indian history, be it Russia and Ukraine, be it Israel, Palestine, be it anywhere. War is important. And that is shown in this movie. राइटियस कॉजेज लेकर नेटिव मिलिशिया अगर इन्वेडर्स के अगेंस्ट उठ खड़ी हो अच्छा है, तो मॉरल कंपस किसी भी देखने वाले का उस रिबेलियन को चैलेंज नहीं करेगा. एंड गेट अगर यही लॉजिक हम असल जिंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि कोई भी फिल्म वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती है, यही एम्पैथी असल में हम अप्लाई टू पॉपुलेशंस राइट नाउ रेजिस्टिंग ऑक्यूपेशन, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज फाइटिंग फॉर सेल्फ रूल, हमारी अलाइनमेंट कोलैप्स हो जाती है. तो दोस्तों मैंने तो निर्णय लिया है, इस फिल्म से मैं सीख ये लूंगी, जैसा कभी कलश कह रहे थे एंड में, बिना लड़े जो हार गया उन पर है धिक्कार. एज आई लेफ्ट द मूवी थिएटर विद एंगर इन माई आईज एंड पर्पस इन माई स्टेप. बहुत अच्छे, ये लड़े किससे अब? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म की बाढ़ आई हुई है, उससे लड़े, खड़े हो जाए ढाल बन के. Says a person who does not know history, who does not know how to speak, who does not know how to produce a YouTube video. This is just blatantly stupid.
overall. तो उन लोगों के खिलाफ जो आमादा है ये प्रूव करने में कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की जरूरत नहीं है फिल्म देखते हुए। जीतने तो नहीं देंगे उन व्यक्तियों को। इस रिव्यू की तरह ये फिल्म भी लंबी है, but not because of the sheer number of events that this film covers, but because of how repetitive its rhythm becomes. A sequence from the third act could be lifted and placed in the first 30 minutes of the screenplay and it would make little difference. आखिर का आधा घंटा इस फिल्म का is the most difficult thing I've ever had to sit through. Unlike Om Raut, Lakshman Utekar displays great control over his visuals. He has a firm grasp. That's it. One line. That's how much Chhatrapati Sambhaji Maharaj means to you. That's how much Chhatrapati Sambhaji Maharaj means to our history books. One line about how the last 30 minutes showed him struggle, his torture. That's it. So this face is exactly what represents the current problem that people of Bharat are trying to fight against. That we need to understand our history. We need to know our history. Otherwise, this is what happens. This is the face that you will make. This is the face that our children will make in future when they do not understand where they are coming from. On cinematic compositions, carefully constructed frames हैं, image सब evocative है, but all of it exists in service of rage, not reflection, and ode to masculine aggression कि मैं आदमी हूँ, मैं कच्चा खा जाऊँगा. और नहीं, it's history. It's the struggle of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. It's the war of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and it's the winning of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. That's what it is. ठीक है? This is not Animal that you are reviewing. This is Chhava that you are reviewing. And if you cannot respect that, and you cannot respect the topic in hand, I don't know where she was in Sardar Udham Singh's review. I don't know her if she had made a review on that or not, or if that also enraged her because it was talking about actual history, because it was talking about actual war, because it was talking about actual oppression faced by the Sikhs in Jallianwala Bagh incidents, by the British hands, and actually by the Indian troops who were pulling the trigger. I don't know what her review was at that point for that movie, but if that was positive, then I believe then that she's extremely biased towards just Hindus fighting against Muslims in history. Even the thought of Hindus getting a fight and winning against Muslims in history enrages her. So this is what the blurry eventual outcome of this entire movie was to her. Of course, you should not have a conflict if you are a citizen of India. Of course, you should not have a problem with your neighbors who can be Muslims, who can be Hindus, who can be Christians, who can be Sikhs, who can be Buddhists. You should not have that conflict in this democratic country. Of course not. But in history, it was a fact. And she is trying to deny it, just labeling it as a Hindu versus Muslim propaganda movie. और इसी वजह से the film will find its audience. There is an appetite for this kind of storytelling, for its clarity of allegiance, its nationalism. विकी कौशल को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिलेंगे. टेक्निकल मेरिट्स की बातें होंगी राउंड टेबल्स पर कि क्राफ्ट पर डिस्कस कर लें तो अनकंफर्टेबल मैसेजिंग पर कमेंट नहीं करना पड़ेगा. और हिस्टोरिकल एपिक्स में इसका नाम शुमार हो जाएगा. भले टू बी ऑनेस्ट इट इज लिटिल मोर देन अ चीप अनसक्सेसफुल भंसाली इमिटेशन. छावा Cheap, unsuccessful. has a heart. But what does that heart beat for? It beats for war, for battle, for the righteousness of one side against the other. Brain nahi, bas brawn hi to. So on a scale of 1 to 10, Chhava is... It beats for Chhatrapati Sambhaji Maharaj and every Hindu, every Maratha of this country. That's it. It beats for the ignorance of Chhatrapati Sambhaji Maharaj from the Indian history textbooks. It beats for justice. It also beats for why we are free today, why we have freedom today. मेरे हिसाब से इसके आगे और कुछ है नहीं. मेरे हिसाब से इसके आगे मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ है नहीं. This was an extremely biased review by this person who should not be a reviewer. And I said what I said. If you have a problem, then fine, come to me in the comments. If you did not, then
Please understand that start watching my videos in 1.5x speed because I speak slow. Sorry. Apart from that, you should go and watch Chhava, and this movie will make you understand what you did not understand in your history classes, in your history textbooks. So that was about it. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.